Imam, Gulfisha Fatima, Khalid Saifi, and many others. These activists have now approached the Supreme Court seeking justice. This program is an attempt to engage with this urgent issue, to understand the continuous denial of bail, the curtailing of dissent, and the broader implications for civil liberties in India. It is not just a question of the denial of liberty of these specific activists that is in question, but the overarching chilling effect that it has had on the civil liberties across the country. Today, we have with us distinguished jurists, lawyers, and public figures who will share their perspectives, insights, and experiences on these critical questions. Let me now introduce our panel for the session. The panel consists of some of our closest allies in the legal fight for human rights and civil liberties. These are lawyers who have been at the forefront of defending freedom of speech, expression, and the right to dissent in India. Our panelists include Advocate Corin Gonsalves, Advocate Nithya Ramakrishnan, Advocate Prashant Bhushan, Advocate Sanjay Hegde, and Advocate Varisha Farasat. Sanjay Hegde sir is on his way, he will be here soon. Each of them brings immense expertise and experience in constitutional law, civil liberties, and public interest litigation. The discussion will be moderated by Advocate Shahrukh Alam, who will guide the conversation around the denial of bail, criminalization of dissent, and the broader implications for our democracy. Ma'am and sir, if you could please come on stage. I think in typical Delhi style, we've invited a lot of speakers. I think we've got a speaker for every friend who's inside. There are 10 speakers, so we decided that in the first segment, we could do a panel discussion, which I will moderate. And if I may invite Colin and Mr. Prashant Bhushan, Nithya, Varisha to come up, we could just have a discussion on this. And then we'll go into the next segment, where the former judges will address us. A brief summary of the program. So first we'll begin with the panel discussion, and that will be followed by addresses by Justice Iqbal Ansari and Justice Madan Loku, and we'll conclude the program with addresses from Prakash Raj and Kanan Gopinathan sir. And this case, the way this case is being there's both a political register and a legal register. It's not purely a legal case, it's not purely a political case. The political and the legal interweave, they're interwoven. But I want to take this opportunity to talk strictly about the legality, and perhaps you also visit the political aspects of it. But let me start with the legality. सबसे पहले ये होता है किसी भी केस में कि इससे केस है क्या, पुलिस कह क्या रही है, स्टेट कह क्या रहा है, क्या गुनाह किया है लोगों ने. और अगर आप चार्जशीट पढ़ें तो ये एकदम से साफ नहीं होता है कि क्या गुनाह किया है. A lot is said about speeches, a lot is said about protests, a lot is said about how people were disrupting traffic, causing inconvenience. मगर केस बनता नहीं है. So I want to start backwards. I want to step back and I want to see कि किस स्टेज पर क्राइम हुआ है, किस स्टेज पर भी ऑफेंस हुआ है. सबसे पहले अगर देखें तो in a democracy everyone has the right to dissent and everyone has the right to not like a political party or not like a political ideology and be consistently opposing that ideology. 10 साल से 12 साल से 15 साल से ये मेरा political position है कि आपकी politics हमको नहीं पसंद है और हम consistently oppose कर रहे हैं.
क्राइम नहीं बनता है। हम आपके खिलाफ मजमून लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, हम आपके खिलाफ बोलते हैं, कंसिस्टेंटली बोलते हैं, ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया में कहते हैं, यूज करते हैं, उस स्टेज पर ये क्राइम नहीं बनता है। हर इशू पे हम आपको अपोज कर रहे हैं, सीएए पर, 370 पर, वक्फ पर, उस स्टेज पर ये क्राइम नहीं बनता है। फिर किसी इशू पर, सीएए पर हम सड़क पे उतर जाते हैं, तो शायद उस स्टेज पे क्राइम बनता है। मगर किस तरह का क्राइम बनता है? हम सड़क पे उतर के क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है पेटी मिसबिहेव आपने सेक्शन 144 का उल्लंघन किया है, ये बहुत छोटी सी बात है, पेटी मिसबिहेव है, पेटी क्राइम, या आपने बहुत इंसाइटफुल स्पीचेस दिए, तो फिर आप सेक्शन 153 ए में कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आपने इंसाइट किया है लोगों को या प्रोवोक किया है लोगों को। टेररिज्म का ऑफेंस किस चीज से करता है, कैसे करता है? So if you could start with that, you could start talking about that. That how have we got to a stage where we're talking about provocation, we're talking about incitement, without knowing who I have incited, without even talking about who got provoked. Law में ये है कि अगर आपने किसी को प्रोवोक किया है और प्रोवोक हो कि उस आदमी ने वायलेंस किया है, तो पहले उसको पकड़ा जाएगा और वो आदमी कोर्ट में ये कहेगा कि भाई इन्होंने इतना प्रोवोक कर दिया था, उनसे रहा नहीं गया, आई इंडल्ज इन वायलेंस। बरीशा मेरे बगल में बैठे हैं, तो बरीशा को प्रोवोक करते हैं, बरीशा एक थप्पड़ लगाते हैं, तो हम ये नहीं जाएंगे। बरीशा से पूछा जाएगा कि आपने शाहरुख को क्यों पीटा, और बरीशा ये कहेगी कि प्रोवोक किया था शाहरुख को। इस केस में इन लोगों ने किसको प्रोवोक किया है? कौन आगे कह रहा है कोर्ट में? कालेज में या गुलदस्ता में या शर्जी ने इतना प्रोवोक कर दिया था हमको कि उनसे रहा नहीं गया। किसी को आगे कहना होगा ये आपको, या फिर कौन कह रहा है कि इतना इंसाइट हो गया इनकी स्पीचेस से कि हमसे रहा नहीं गया? वो नेक्सस कहाँ है, केस कहाँ बन रहा है? Let's start with that. Let's move on. I have not been studying about this activity, and I am trying to enter into the minutes of the case that you mentioned. But even without going into it, यूएई से बहुत पहले हम लोगों की एक स्टेट की मानसिकता बन गई थी, सिर्फ स्पीच या सिर्फ पॉलिटिकल एक्शन, उसके बहुत सारी consequences हो सकते हैं, so there can be criminal consequences. Speech simplicity. I think the problem begins there. Once you see speech can provoke, so speech alone can be sedition, then 100 Kedarnath do not dawn upon the police station, which will register an FIR of sedition. Now, expression of opinion has also been made expressly an offense, expression of opinion of a certain kind, under the UAPA and many other laws. So this carceral obsession of the state, किसी भी चीज को जिससे कि राज्य सरकार को स्टेट को तकलीफ पहुंचे, उसको एक ऑफेंस बना देना है, उसको क्रिमिनल ऑफेंस बना देना है, जिसमें जेल हो सकती है, कुछ ज्यादा कुछ कम, ये बहुत पुरानी मानसिकता है। और इस सिनेरियो में आपका आजकल यूएपीए और कुछ और कानून आए। ये इससे पहले की इन केसेस के बारे में, यूएपीए के बारे में बात करें, ये जो प्रोटेस्ट चालन बात में हो रहे थे, तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में किसी कुछ डाला है। And then a highly problematic statement of Justice Service Court, in a judgment saying in free in blood and no place for protest.
I would only invite all of them to see Gandhiji's evidence before the Ansar Commission. He was specifically asked this question: would Satyagraha be relevant if your country attained independence? And his answer was yes, because the people's weapon against injustice is protest. So once you have a criminal system ready and poised to sue the public order to the ground on which various fundamental rights can be curtailed, but is it necessary that it should be a criminal process involving deprivation of liberty? Is the first step.